Welcome to World of Biology. Today I am going to discuss about the classification of bryophytes. The bryophytes are divided into three classes. First is Hepaticopsida, which is known as liverodes, Anthoceratopsida, which is known as hornodes, Bryopsida, which is known as mosses. Then first comes to the general characteristics of Hepaticopsida. Why Hepaticopsida is known as liverode? Because the word hepati means liver. So, what is the general characteristics? The gametophytic plant body is either thalloid or foliose. In the foliose form, the leaves are without the midribs, and the thalloid is dorsiventral, lobed or dichotomously branched, and the sex organs are born dorsally embedded in the gametophytic tissues. The sporophyte is made up of only capsule in Rixia and foot, seta and capsule in Mercansia. The sporogenous tissue develops from endothecium. Endothecium is a layer of sporophyte. Then comes to reproduction. There are two types of reproduction, asexual and sexual reproduction. How asexual reproduction? It takes place by fragmentation and the formation of gamma. Gamma are produced inside the gamecops. Here is the gamecops. In the gamecops, gamma are produced. Gamma are asexual buds, which is green in color and it is multicellular. The gamacop develops into new plant after detaching from a parent plant. Then comes to sexual reproduction. The male sex organ is called antheridium and the female sex organ is called archegonium. Then they produce sperm and egg respectively. Antheridium produce the sperm and archegonium produce egg. After fertilization, zygote is formed and the zygote develops into diploid sporophyte. A few cells from sporophyte undergo meiosis and they form haploid spores. Then the spores develops into haploid gametophyte, which are free living and photosynthetic gametophytes. Then comes to Anthoceratopsida or hornodes. The examples of Anthoceratopsida are Anthoceros, Notothylus, etc. The examples of Hepaticopsida are the Rixia, Mercansia, etc. Then main features of Anthoceratopsida. Anthoceratopsida it is the gametophytic plant body. It is flat and dorsiventral, and the rhizoids are smooth-walled rhizoids, and sex organs are present dorsally embedded in the thallus, and the sporophyte differentiate into foot, meristematic region and the capsule in the Anthoceratopsida. The sporogenous tissue develops from amphithecium, and the pseudoelaters are present in the capsule. Pseudoelaters present in the capsule. What is elaters? Elaters is the function. The function of elaters is to spore dispersal. It is present the bryophytes for spore dispersal mechanism. The columella is present in the capsule. Columella present in the capsule, and it originates from endothecium. It originates from endothecium. Here also two type of reproduction. Then the asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction by the fragmentation of the thallus or under unfavorable condition, tubers are produced. In this way, asexual reproduction carried out in the Anthoceratopsida. Then the sexual reproduction. Sexual reproduction it is carried out by waterborne sperm
and the antheridium travels to the archegonium. Then the fertilized egg develops into sporophyte. Sporophyte split lengthwise to release the spores, which develops into gametophyte. Sporophyte स्प्लिट होके गैमेटोफाइट को डेवलप होता है. देन ब्रायोप्सिडा. ब्रायोप्सिडा इट इज द मसेस. इट इज द ब्रायोप्सिडा मसेस. इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स. द एग्जांपल्स आर ब्रायोप्सिडा, फ्यूनारिया, स्पाग्नम. These are the mosses. The main features of Bryopsida, that the gametophyte differentiated into protonema and foliage gametophore, and the rhizoids, here the rhizoids are multicellular, but in the Hepaticopsida rhizoids are unicellular. Here Bryopsida में rhizoids multicellular होता है और इलाटस absent होता है. इलाटस में कहा था कि वो मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल करता है ब्रायोफाइट्स में, बट हियर इलाटस absent. The sporophyte differentiated into foot, seta and capsule. Here the sporophyte differentiated into here the foot, seta and capsule. Capsule upper part is called capsule. It is the middle portion is seta and the basal portion it is the foot. Foot means here rhizoids present for encouragement in the substratum. Substratum को कनेक्शन करने में राइजर्स मदद करता है. और हियर कोलुमेला इज प्रेजेंट एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू. हियर स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एंडोथेसियम. एंडोथेसियम लेयर में स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होता है. हियर ऑल्सो टू काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual. Asexual reproduction by budding and the fragmentation of secondary protonema. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और बडिंग इज द बॉड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर ब्रायोप्सिडा. एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, antheridia and archegonia present in the apical part of the leafy shoot. Here leafy shoot के apical part में antheridia और archegonia प्रोड्यूस होता है. Then fertilization takes place, sporophyte produced, and the sporophyte which is more differentiated than liverwort. liverwort और Hepaticopsida में जो sporophyte होते हैं इससे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है ब्रायोप्सिडा के स्पोरोफाइट. एंड देन gametophyte develops from the spores. Gametophyte spore से develop होता है. It is the classification of bryophyte and has ended. It is the moss. Here is the sporophyte upper portion and the basal portion, or it is the gametophyte. It is the rhizoids. Here leaf, it is the seta middle portion, and it is the capsule. Here it is the Mercansia thallus. Mercansia thallus के लिए गेमा कप है और ये है archegoniophore in the female. Archegoniophore ये है archegoniophore in the female, and in the male it is called antheridiophore. In male it is called antheridiophore. It is the rhizoids for encouragement. It is the rhizoids for encouragement. Then the economic importance or the ecological importance of bryophytes. Bryophytes इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स के? ब्रायोफाइट्स ग्रो डेंसली टू एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स. सॉइल को बाइंड करने में ब्रायोफाइट मदद करता है. और दे डीकम्पोज द रॉक मेकिंग इट सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. ब्रायोफाइट मदद करता है रॉक को डीकम्पोज करने में, और वो मदद करता है कि हायर प्लांट का डेवलपमेंट और
ग्रोथ में मदद करता है एंड it play an important role in bog succession and the mosses form करता है thick mat. It is the suitable substratum for germination of hydrophilic seed. वाटर लविंग सीड के जर्मिनेशन में ये मदद करता है. जो मॉस है ब्रायोप्सिडा मॉस, वो इट थिक मैट फॉर्म करता है और हाइड्रोफिलिक सीड के ग्रोथ में वो मदद करता है. दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन. देन it reduces the amount of runoff water due to their water holding capacity. ब्रायोफाइट्स के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं जो कि मदद करता है कि reduce the amount of runoff water. जो वाटर रन ऑफ होते हैं उसको डिक्रीज करने में ब्रायोफाइट मदद करता है. It also help in recycling of nutrients. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करता है और they act as rock builder. रॉक फॉर्मेशन में भी ब्रायोफाइट मदद करता है. और इन द पैकिंग मटेरियल में ड्राइड मसेस यूज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो कि प्रिजर्व करके रखते हैं मटेरियल को. सो पैकिंग मटेरियल में ब्रायोफाइट यूज होते हैं. एंड in the medicinal use भी होते हैं. Sphagnum is used in the surgical dressing due to its high absorptive power. Sphagnum जो कि एक मस है, इसका हाई absorptive power है जो कि यूज होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके होते हैं. सो इट इज यूज्ड इन द मेडिसिनल प्रॉपर्टी. सो it is all about the bryophyte, its classification and the ecological importance or medicinal importance. So thank you. Let's subscribe to our channel and like and comment on this. Thank you.